So, welcome back after Diwali season. But you were not present before Diwali also. So, you have the idea like what's going on? You have to tell me because I forgot. It's you're on a long vacation. Huh? Range of hearing. Range of hearing of the sound. Okay. Yeah, work with earlier. They tone, musical note, ये सब कर लिया. Tone is the sound of single frequency. Music is the sound of mixed frequency, double note. Oh yeah. Range of hearing. So one is audible range. This is audible range. So audible range is the sound that we can hear. So these are frequencies. All the sound with frequencies 20 hertz to 20 kilohertz. All those sounds will qualify as audible. This is to us humans. Okay. But there are ranges below this. That is called infrasound. Audible range is also called as sonic. This is infrasound. Or infrasound. So infrasound waves or infrasounds. So these are not audible to us. Their frequencies are less than 20 hertz. Then we have also frequencies above this frequency range. They are called ultrasound. Or it is also called as ultrasonics. Okay. So what is the frequency range for this? Greater than 20 kilohertz. So we can actually reproduce when we speak, we are producing sound in this frequency, right? And when we listen, so that is we're detecting sounds in this frequency. So humans can produce and detect the sound. So when we speak, we produce and detect. So speak.
when we listen. Humans produce and detect sound waves in this range. Okay. So what about this? Who is able to hear this sound? So infrasound can be heard by dogs, then elephants, whales, rhinos. Rhino को क्या कर लेना? Rhinoceros और rhinosaurus होते हैं, क्या होता है? C. Okay. ठीक है, तो these species can produce when they speak and when they listen sound in the range of infrasounds. ठीक है. What about ultrasound? So we cannot hear neither infrasound nor ultrasound. So this is produced by bats, dolphins. I think bats can also produce infrasound, both. Okay, bat falls in both range. ठीक है, ये सारा है. इसमें the sound waves with greater frequency are more energetic. Okay, so these are most energetic. Sound waves. So ultrasound waves are the most energetic sound waves due to their high frequency. High frequency and small wavelength. So since they have small wavelengths, right, they do not bend easily. Like बड़ा wavelength होगा तो बड़ा easily उसका path change कर देगा. लेकिन छोटे साउंड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमको छोटा ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, सो इट कैन ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन. इसका बहुत सारे एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड. Therefore, these waves can travel maximum distance through the medium. So, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी होती है, so it can travel maximum distance in straight line. मतलब डिविएट नहीं होता वो.
कोई भी चीज बहुत फोर्स में आगे जाएगी वो सीधे जाएगी बहुत दूर तक and therefore it finds many applications in industry application. Ultra has many applications. Okay, because it can travel very long distance through the medium, it finds many applications. So navigation and ranging. So in short, it is also called as sonar. Your first application. So navigation means safe direction. Like a sailing ship. And ranging means estimation of target or threat. तो जो रेंजिंग होता है उसको क्या होता है एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ठीक है एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ टारगेट और थ्रेड थ्रेड यानी ऑब्स्टेकल उसका मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ ठीक है तो इट आल्सो हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गाइडेंस विजन हाँ गाइडेंस विजन गाइडेंस विजन गाइडेंस गाइडेंस क्या है वो सर विजन है वो अल्ट्रावेव की होती है मतलब सायरन ऐसा कुछ है क्या विजन लाइट भी है उससे मतलब मशीन मशीन में यूज होता है हाँ एनिमल्स को वार्न करने के लिए यूज होता है ओके क्या गैल्टन गैल्टन विजन मतलब जैसे रिपेलेंट to use it as a repellent mosquito या फिर ऐसा हाँ ओके तो आई एम नॉट familiar बुक में नहीं है ना नहीं सामने बच्चा या फिर तुम्हारे जो दूसरे पब्लिकेशन वाले बुक है ना उसमें होगा ब्रदर्स या तुम लोग क्या फॉलो करते हो शायद से ब्रदर्स में होगा अलग अलग पब्लिकेशन एक दो चीज अलग अलग होता और है हमारा मेडिकल एप्लीकेशन तो ये तीनों हम देखेंगे ठीक है तो अल्ट्रासाउंड का तीन तरह से हम यूज करते हैं नेविगेशन एंड रेंजिंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो वेल्डिंग में क्रैक्स होना या फिर कोई जो मेटल ब्लॉक्स है उसके बीच में अंदर की तरफ कुछ कैविटी है या ब्लॉक है क्रैक है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड वेव से फिर मेडिकल एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं दैट आल्सो विल डिस्कस ठीक है वन बाय वन तो ये समझ आ गया व्हाट इज रेंज ऑफ हेयरिंग इट इज classified according to the frequency of the waves and who can produce and detect these waves that also I have discussed. Then we figured out that ultrasound waves are most energetic. So since they are most energetic, they will go maximum distance without getting absorbed. Okay. Let's discuss navigation and ranging.
So it stands for sound, navigation, and ranging. Because ultra, so all three, infrasound, audible, or sonic, and ultrasound, all of them are sound waves only. This category is audible to humans. This is not. That's the only difference. But it is audible by certain species. Okay. So they're all sound waves only. Okay. Because hearing depends on the sensitivity of the ear. Our eardrums are not as sensitive as their ears. Okay. Or these ears. तो बैट का तो ईयर होता है क्या? नहीं होता। होता है क्या? तो सुनेंगे कहते होता है। बैट को होता है। आँख होती है लेकिन उससे दिखाई नहीं देता उसको। बैट can't see, but it can hear. ठीक है चलो. What about snake? They can see, but they cannot hear. Yes. Snake can see, but snake cannot hear. So it can feel the vibration. So snake, how does it like if snake does not have ears and if you're not in its view, like पीछे देखता है क्या snake? नहीं देखता है, सामने देखता है. So it can feel the vibration, very sensitive. तो उससे हो जाता है. Okay. Now navigation and ranging के example हम लेते हैं bat के case में. Bat and dolphin. Suppose you have a bat here. ठीक है. अब इसने यहाँ पे कोई तो एक इंसेक्ट फ्लाई हो रहा है. ये तो अल्ट्रासाउंड वेव जो प्रोड्यूस कर रहा है हर डायरेक्शन में जा रहा है. और ये कुछ रॉक क्लाइंब है, रॉक वेरी हार्ड क्लिफ ऐसा कुछ. ठीक है. अभी ये इससे ऊंचा उड़ रहा है ऐसा नहीं है. देयर मे बी हॉरिजॉन्टली डिफरेंट एंगल्स. ओके, डिफरेंट एंगल इन द सेम प्लेस. Sound ये bad sound निकालेगा. यस, अल्ट्रासाउंड वेव निकालेगा. ठीक है. तो ये क्या करेगा? अब इससे रिफ्लेक्टेड वेव क्या है आगे. ठीक है. रिफ्लेक्टेड वेव डिपेंडिंग अपॉन नाउ दिस इज नॉट अ प्लेन सरफेस, इट शुड बी रफ सरफेस. रफ में तो साउंड हर डायरेक्शन में आएगा. ठीक है. So depending upon the nature of the reflected wave, bat will be able to sense whether it is a target or a threat. Target could be its prey. So it is safely he will fly and capture it. But if he keeps flying in this direction, he will hurt himself. Because उसको दिखाई नहीं देता है. So he will immediately, switch direction. So direction indicates ranging, safe direction. That is, navigation. Change course or change or fly in a proper direction. That is navigation. Okay. And to calculate this distance of thread is called ranging, estimation of distance. Okay. And how do they estimate? From the nature of reflected wave. Because this target is mobile. It's a mobile target. And by past experience, he would know that this is a safe hunt for him. ठीक है. जबकि यहाँ पे it is not safe. ये तो हो गया बैट के केस. Same thing, it could be dolphin inside water. जैसे बैट एयर में कर रहा है, dolphin can do the same thing in water. ठीक है. So dolphin can also produce and detect sound waves. Now what about humans?
Welcome to bad propagation. लाइफ खत्म होने के बाद this is the application of navigation and ranging in case of animals. और ह्यूमन कैसे करते हैं? तो हमारे पास एक डिवाइस होती है, सोनार डिवाइस, जस्ट लाइक दिस है, इट्स अ गैजेट. सोनार डिवाइस पे क्या होता है? It has two things, transmitter and receiver. जैसे like humans have two things, sound producing is this faculty, right? And ears are listening. So production is transmitting, broadcasting, and listening is receiving. Mobile में भी होता है, when you speak in the mic and when you hear in the speaker. So every gadget has two facilities, production and reception. Okay. So let us say I install it in the ship. I install this facility in the ship. I have drawn it very big. It's out of scale, okay, just to show you these things. So let's say this ship is sailing in some direction. Okay. And what is the application? So transmitter can send rays in all directions, sound waves in all directions. Okay. So if I want to find the depth, I can send and receive. So this device will tell me the time of echo. It is the application of reflection of sound. We have already discussed echo, right? Have we? We haven't discussed echo. देखो notes देखो, echo नहीं discuss की. ठीक है. So I'll tell you what is reflection of sound. Reflection of sound नहीं discuss किया है. Okay. So when the rays are sent back, it is basically reflection of sound. Okay. So echo is one example of reflection of sound. Everybody has heard about this. Everybody must have heard about, heard or experienced now. What is echo? When we speak, we always strike against some surface and it will come back to us. Yes. So when you hear two distinct sounds, one your own and the other reflected sound, that is called echo. When you visit old archaeological sites, big castle, a big hall, so there when you say something, you will hear your own echo, reflected sound. What Taj Mahal. Taj Mahal or Imambara or any fort for that matter. So what is echo? It is the distinct reflected sound of the original sound ceases to exist. During distinct, distinct. That is distinct reflected sound after the original sound ceases to exist. See, just like light wave, you have studied about reflection of light. Light is a wave. Any wave actually obeys laws of reflection, including sound waves. Okay? So all waves obey laws of reflection. So echo also is a reflection case, right? So what happens? Just that the reflector size should be much bigger. Light can be reflected by all sources because the size of light is very small. Okay, but sound wave is big. It could be like 0.2 centimeters से लेके वो 10 meter तक हो सकता है. So to reflect sound wave, we require a bigger surface. What is surface is sound wave reflecting? Okay. That's why you hear echo by a hill when you are close to a hill or big fort जिसमें बड़े-बड़े walls होते हैं. वहीं पे तुमको echo सुनाई देगा. ठीक है? तो open area में echo नहीं सुनाई देगा. You need big obstacle to reflect the sound back. ठीक है?
तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी मान लो कि तुम्हारा कोई बड़ा सा वॉल है, ठीक है, ये मिरर नहीं है, क्या वॉल है, रिफ्लेक्शन। तो अगर मैंने साउंड वेव यहाँ पे मान लो ये डी डिस्टेंस पे डी, तो ये रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगा, मतलब इसी लाइन पे आएगा वापस। नॉर्मल है, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है? एक ही रे नहीं आ रहा, हर रे के मैं तो इसको ऐसे दिखा दिया, डी जाएगा और डी वापस आएगा। मान लो उसमें टाइम टी है, इज द टाइम ऑफ इट। So what is the speed of sound? Speed of sound is distance upon time. the distance is d plus d, because here is speaker and the listener. So speaker से sound अलग आ रहा है, listener को अलग से आ रहा है, ऐसा एक ही चीज है, ठीक है। इस टाइम हो गया, ये क्या हो रहा है? 2d by, Divided. और speed of the sound in the medium is known to us. We have done the experiments and we know it. What is d? Into 10. And t be measured experimentally. Let's say we have a stopwatch. When you produce sound, you started the clock, and when the sound was received back, when you heard the echo, you stopped it. So t you can measure experimentally, correct? D is the distance, that also you can measure, right? Yeah, we already have, that d can be calculated as v into t by. This is how estimation is done. So in the ship, when we have sonar device, what we'll measure is time of echo. Because we know when we started sound wave, ultrasound, when we switched on, it went back. And when we detect it, that time the counter will show us the timer. There's a dial display in which it will show echo time. So once we know echo time, and we already know what is the speed, the V and T are known to us, right? Then we can easily calculate D. Okay. So in case of shift, where it is useful, one is like you can calculate the depth of sea or river. So estimation of depth of sea. Second is, let us say you have some glacier here. For iceberg. Iceberg, sorry, iceberg. Glacier is on top of hills. This is iceberg. So iceberg में क्या हो रहा है? Only less than 10% is outside water, which the captain can see. But most of the shape is hidden inside water. You don't know how much spread out it is inside. So it's a disguise, right? So the reason behind collapse of Titan. Yes. So ship also has a propeller, right? It has a propeller, which is responsible for pulling the ship ahead. So it's rolling, right? That's how it keeps progressing like that. And a lot of portion of ship is below water. And the uneven shape of iceberg, okay, is not clearly visible from above the water surface. But what you see is only tip of the iceberg. So there is a chance of, like, captain takes some random decision, okay, little bit of direction it deviates. Whereas the deeper propeller may get, it may collide with the hidden portion of the iceberg. An accident may take place, which is what happened in case of Titanic. So if these device was used, sonar device, then it will send waves in all directions, and gather the reflected wave. Then the distance can be calculated, right? So if it is in the path of the ship, so from the estimation of distance, you will then have to decide whether this is safe direction to travel or not. Then you will increase the angle of movement, or you will navigate into, you will take the ship into safe direction. The call for navigation will have to pick in, because ये यहाँ से जल्दी आ गया. So it is a threat then. It's not safe to navigate in the or sail in the same direction. Understood? So with the help of sonar device, we can actually do all that. Is this formula clear? You have to only keep in mind whenever we are using the formula for
echo of sound. In all those questions, the D has to be taken as twice, 2 times. And what is the time of echo? Clear? The distance between Between the source and the obstacle. Again, but the for echo, it has to go one way and come back. That is the time of T. Full round trip time is T. Okay. So if it is so, why are they not able to hear echo inside this? Are this wall not big enough? Are they big surface? Yes. Ideally, we should hear an echo here also, right? So therefore, what is the speed of sound I told you in the last class? What is speed of sound? It's roughly 340. 344 or 346. That's what we saw at some temperature. 330. 330 meter per second at 0. At 0 degree. It's not 0 degree. Room temperature. Normal. What did I tell you? 340 first. In CBSE, they have given 346. 330 at 0 degree and 340 at room temperature. So we exist at room temperature, right? So क्या होगा? So let's calculate D for our case. When do we hear echo? Now, there are two reasons why we are not able to hear the echo. One is whenever we speak, okay, that sound stays in our ear for about 0.1 second. 1/10 of the second it remains in the ear, persists. Okay. So for echo to be heard, the reflected sound must reach back after 0.1 second. 0.1 second. If the sound reaches us before 0.1 second, we will not hear two distinct sounds. So for echo to be heard clearly, we have to hear two sounds separately. Okay. So if there is a overlap, let's say the reflected sound comes back before 0.1 second, then there is no clarity now. Reflected sound will merge with the original sound. Original sound is still there, it is not died. It is not absorbed in the wave. It's like this. When I speak, that's when I speak. You only hear me only for that duration. So when I speak, that is lingering in your ear for about 0.1 second. So you will understand the words clearly when my next syllable or word comes after the finished word has died in your ears. Okay? That's it. So this is what it is. But if the reflected sound comes back before that, that's what is happening. Whenever I'm speaking, the reflected sound is coming, reaching my ears almost instantly. Okay? So what should be the minimum distance of the obstacle for me to clearly hear the echo? That should be more. Because this is very less. So let's find out. So what is the distance? So I told you that speed is 340. And time of echo is minimum 0.1 second. Time of echo is minimum 0.1 second, isn't it? So for me to hear echo, 340 upon 20. so no, 334 minutes. 17. 17 minutes. Is any of the wall 17 meters from me? Oh. None. Either the roof, nor the ceiling, nor the four walls. That's why I'm not able. Because minimum distance for echo to be heard should be at least 17 meters. So the sound is coming back to me within 0.1 second. Okay, that's what is happening. Why? Because in 1 second, sound is traveling how much? 340. 340 meters. This 340 meters per second. Meaning, in 1 second, the sound is traveling or covering how much distance? 340 meters. 340 meters is very large. Like the flip of this sound has traveled 330.
When I do like this, will somebody be able to hear? Why? Because it doesn't have enough energy to travel through the medium without getting absorbed. Now you get the idea? Like if I have to speak to somebody standing on the other side of the road, I have to really shout out. So when large amplitude, then the sound will be loud. You understand? So I have to put in a lot of energy. Okay? If the energy is not sufficient, sound will not travel long distance. That's why ultrasound travels long distance because it has a lot of energy, high frequency. Okay? Is that clear? So many things I have explained here. I hope you are able to absorb it. So just pick up the concepts. So far we have discussed only this part, navigation and ranging and Sir, reflection. sonar uses longitudinal wave or transverse? Sonar, longitudinal. In fact, most of the sound waves we are dealing with are longitudinal because we are dealing with what? Fluid medium. Only in solid medium it is transverse. Okay, fluid it is longitudinal. And in fluid, if it is on the water surface, then it will be transverse. I just asked a question paper, it was not mentioned in that book. Water. This question. Sonar uses longitudinal or transverse? Sonar, Sonar uses longitudinal or transverse? longitudinal mostly. Okay. So what is the correct answer? Did they tell you that? No, Well, let's wait. What have you written? the longitude. Ah, clear. Okay. Next, let us check out industrial application. Is this clear? Navigation and ranging, both in case of animal and in case of humans. Humans do it with the help of sonar device because our ear cannot hear ultrasound. All these rays are which rays? Which sound waves? Ultrasound waves. Okay? It produces the sound waves in ultrasound. So we cannot hear it. Right? Okay. So just read the points given in the book. Application of ultrasound, range of hearing selective application. And see if you still want me to explain certain things. Okay. ये बोर्ड नहीं कर पाएगा नहीं हुआ सर, फिर मैं आपने पकड़ लिया मेरे को, हाँ आपने पकड़ लिया मेरे को कि मैं क्वेश्चन पेपर में मेरे आंसर मार्क कर, अच्छा फिर मैम मेरे को ही देखती थी से कर नहीं पाया। अभी कर देगा हाँ कैसे आता है, कैसे करेगा कैसे मास मास का क्या रिलेशन है डेंसिटी के साथ डेंसिटी ज्यादा और मास भी ज्यादा, देखना पड़ेगा फर्स्ट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मास इज इक्वल टू Density डेंसिटी to volume. हां वी हो हाँ तो वही किया मैंने। हाँ ठीक है क्वेश्चन पेपर पे आंसर मार्क करना अलाउड नहीं है ना क्यों किया तुमने अरे सर मैं जगह पे क्वेश्चन कर लिया है वो मार्क कर सकते हैं क्या क्या मतलब ये क्वेश्चन नंबर पे टिक कर सकते हैं क्या बेटा है डाउट था, इसलिए मैंने ऐसे किया, उसमें डाउट है मुझे, लास्ट के लिए रखा था कि सोच के लिए, इसमें मैंने ऐसे किया, वही छुप छुप के करना पड़ा।
ठीक है बहुत मेरे ख्याल से अच्छे से कर पाया होगा तो सब कुछ तो किया है तभी के लिए साउंड की बात नहीं है, जैसे घर से किया था साउंड। साउंड तो नहीं किया लेकिन रोटेशन हो गया था ना पूरा रोटेशन पूरा करेक्ट है, पूरा इसी में अटकते हो रोटेशन रोटेशन में अटकते हैं थोड़ा बहुत साउंड में भी अटकते हैं the type of wave used for sounding. Give one use of sounding. ये वन यूज ऑफ Sound ranging, navigation. navigation ठीक है साउंड रेंजिंग हाँ, रेंजिंग तो एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस रेंजिंग नेविगेशन के लिए नहीं एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव समझ में आ गया क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव बता सकते हो yeah. How will you explain reflection of sound? So whenever sound wave hit any obstacle, it is reflected. Obeying laws of reflection. Which is law of reflection? Angle I equal to angle of ठीक है तो अगर वो along the normal hit कर रहा है जैसे इस केस में this is the reflecting surface अगर वो ऐसे hit करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी यही डायरेक्शन में है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में ही है इसलिए हम दो अलग अलग लाइन दिखाते हैं क्यों जो माउथ और ईयर अलग अलग है इसलिए और कुछ एक्चुअली जा रहा है वो सेम पाथ का जो डायरेक्शन है रिवर्स ये इंसिडेंट डायरेक्शन है ये उसका रिवर्स डायरेक्शन दैट्स इट ठीक है देन टाइम ऑफ echo is measured and speed of sound is known to us in the given medium जैसे इस केस में c1 this will be given to you so time of echo if you have to find out then distance will be given so from this formula any two quantities will be given okay sometimes this is not given directly frequency and wavelength is given you have to find v is equal to f lambda and from there you have to use that okay sometimes those things will be just to play around with this formula is important we must remember this formula whenever you are solving the questions of reflection of sound or echo questions so read your question carefully whether is this question related to echo then only d की बजाय क्या यूज करोगे 2d क्योंकि d going and d coming back echo के क्वेश्चन में यहीं पे गलती होती है और किसी किसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ echo नहीं दिया होता है तो मैं क्या यूज करना है पॉइंट वन they expect you to remember if the question is on echo of sound they expect you to know time of echo is 0.1 for human ठीक है these two things you have to keep in mind so have you written the formula ये मार्क किया या टी लिखा है क्या होता है टी ये तो लिख लो break is for how much duration 5 minutes. 5 minutes के break है conditions of echo
बताओ मैंने डिस्कस किया 10-17 मीटर और मिनिमम 17. सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल From source. Yeah. 2. Energy should be more. Size of obstacle. Must be variable. So, wavelength of sound. ये कितना है 2 सेंटीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर. ठीक है 2 सेंटीमीटर से लेके कितना है 10 रेट और 10 रेस टू कितना दे दिया है और ऊपर साइज दिए सेलेना में देखो या तो सेट को वेवलेंथ का साइज दिया है. I think it's about 2 to 10 millimeter. ठीक है वॉल्यूम तो इतना ही है स्टार्टिंग. और इसके में दे रहा हूँ. I know it's not probably. Actually 10th में ये चैप्टर फिर से बहुत डिटेल में उसमें सब ये जो मैं बता रहा हूँ फिर से हो. थर्ड में क्या है energy of the sound wave should be sufficient. Okay, so that the sound wave is able to travel both forward and backward. Otherwise, the medium में absorb हो गए तो आएगी पहुंचेगी नहीं तुम्हारे पास. तो sound wave must have the incident and reflected. Yeah, the incident and reflected sound wave must have enough energy. Okay. Travel. ठीक है. So that forward and backward motion पूरा होना चाहिए तो ये एटमॉस्फेयर है. जो पहले अब्सॉर्ब होके खत्म हुआ. ठीक है ये 2-3 चीजें. नहीं ये खाली अपने फर्स्ट पार्ट हुई. बाकी क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये दोनों ही थी यही वाला प्रोसेस समझने के लिए क्योंकि इसमें एक तो फर्स्ट पार्ट में ही 2 चीजें नेविगेशन रेटिंग प्लस में एनिमल के केस में भी होता है ह्यूमन के केस. तो ह्यूमन किसके थ्रू करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस सोनार डिवाइस. एनिमल का खुद का ही होता है. ठीक है उनके पास दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस नेचुरल सेंसेस दे हैव. ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. ये तुम बुक में से देख के करो वो वहां पे ज्यादा अच्छे से देखो. वॉल्यूम है बुक टेक्स्ट बुक. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या क्या है
जैसे इलेक्ट्रॉनिक, जैसे वॉच के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर हमको इसको क्लीन करना है तो कैसे करेंगे? पानी डाल प्रेस मतलब सब डेलिकेट अरेंजमेंट has to be there, right? तो भी पानी कैसे डालोगे, मतलब पकड़ के डालोगे उसको, कैसे करोगे? पकड़ने जाओगे तो वो इतना डेलिकेट है, खराब हो। हम क्या करते हैं, ऐसे सेंसिटिव कंपोनेंट्स को पहले हम एक डिटर्जेंट सॉल्यूशन वैसा कुछ बनाते हैं, उसके अंदर वी विल ओपन दिस एंड पुट इट इनसाइड दैट, leave it for it to soak. After soaking, then we will direct ultraviolet rays on the solution. Due to the frequency or vibration, it will cause things to vibrate. वो जो dirt है, हाँ, that will get loosened because of detergent, chemical reaction with detergent. Then when the vibration takes place, the dirt will leave the components. Okay, it will be detached from the component. ठीक है, अभी ultraviolet rays से vibrate करते हैं तो smooth भी हो जाता है. If we shake it, we might damage, end up damaging the component. ऐसा होगा. सर पर अल्ट्रासोनिक वेव्स किससे आते हैं डिवाइस जैसे एक सोलर डिवाइस है, वैसे ट्रांसमीटर बनाते हैं ना, ऑसिलेटर सर्किट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का वेव, ठीक है, उसको बोलते हैं वेवफॉर्म जनरेटर, ठीक है, वो अवेलेबल है. तो क्लीनिंग ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. कभी कभी कोई कोई पार्ट कैसा होता है, ऐसा गोल गोल होता है, लाइक जिलेबी, यू नो जिलेबी, ऐसा होता है स्पाइरल, कोई स्पाइरल पार्ट है, ऑलवेज स्पाइरल. अब तुम उसमें कैसे उसको, हाउ विल यू बी एबल टू एक्सेस, नॉट बी एबल टू एक्सेस, उसको भी तुम सॉल्व करते हो एंड देन expose that solution to ultrasound waves, then it vibrates and detaches the dust particles. ठीक है, ऐसे करो. एक तो वो हो गया. दूसरा क्या है, स्मॉल एंड odd shape, odd. Components or personal parts. दूसरा हम क्या करते हैं, ग्लास को कट करना है ना, इन artistic shape, you have to cut a glass, so you make use of ultrasound, बहुत फाइन कटिंग करता है. हाँ लाइक गणपति पंडाल में कैसे देखते हैं, पूरा डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वो सब तुम कर सकते. अब तुम कटर से कट करने वाला ग्लास टूट जाए, ठीक है, डेलिकेट होता है, ब्रिटल होता है, तो ग्लास कटिंग में भी यूज होता है. फिर to detect or in detecting cracks in welding, or in metal parts. So crack in welding or cavity in metal block, cavity windows. You understand what is cavity, right? Cracks in welding are cavities inside metal block. So what is cavity? Cavity is like we are expecting a metal block to be solid. Let's say we have to use this metal block in as a pillar for the bridge. Pillar. So we expect it to be a one piece without any deviation, right? Or without any imperfection. So let us say somewhere inside
there is a cavity. So wherever you have cavity, right, its strength will be compromised. It will not be as strong if it was full solid block. What is done is to detect cavity, ultrasound waves are directed. Okay. And on the other hand, a detector is placed. What do you have? You have detector. यहाँ पे एक detector लगा है, इधर एक detector लगा है, और इधर भी एक detector लगा है. Now you are aware that we send ultrasound waves from three sources. But on the other side, it is being received by only two detectors. So one sound is reflected back. So wherever there is imperfection, the sound will be reflected back from there. Okay, this is how it works. So if it was foolproof without any imperfection, all three rays should have traveled. So this is how you can actually find out. Is it visible from outside? No, this cavity is within. Okay, so then therefore it is not fit to be used as pillar. So especially bridge construction, जो railway या फिर water में जो रहता है ना bridges, वहाँ पे you cannot afford to have any imperfect pillar. पूरा अपना अपन उस पे ही आ रहे रोज, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे ऐसा होगा. It will be prone to accidents. So these are some of the industrial applications. 2, 3 we discussed. Right. Now let us discuss medical applications. The medical applications you come across it on a daily basis. वो अल्ट्रासाउंड कराया बोलते हैं ना डॉक्टर ने, उससे क्या करना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड क्या बोलते हैं उसको? सोनोग्राफी. X-ray. नहीं, that is different. Sonography means it is using sound wave. Sonography. कौन सा साउंड वेव? अल्ट्रासाउंड. ठीक है. तो क्योंकि अल्ट्रासाउंड का एनर्जी एक्सरे की तुलना में बहुत कम है. एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, एक्सरे वेव, गामा वेव, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और ये क्या है? साउंड वेव. एक अलग कैटेगरी, सेफ है. तो साउंड वेव सेफ है. इसके लिए बेबी प्रेग्नेंट फीमेल्स में जो बेबी का स्टेटस है वो कैसे चेक करेंगे? कट करके तो नहीं निकालेंगे, फिर तो वापस जाएगा. हाँ, सोनोग्राफी. उससे क्या करते हैं? हम रेस को एक्सपोज करते हैं, तो इट्स एको मेथड. वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा. सो रिफ्लेक्टेड वेव को it is given in the computer, fed inside computer. Then it is processed and the image is generated on the basis of the information received by the reflected waves. अब जैसे मान लो हमको इधर कुछ ट्यूमर हुआ है यहाँ पे, ठीक है? सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो सोनोग्राफी करके रखा हुआ, तो नॉर्मल का जो सोनोग्राफी रिफ्लेक्टेड वेव का पैटर्न है और एक इफेक्टिव पैच का जो रिफ्लेक्टेड वेव वो अलग हो. So immediately when we compare with the healthy human sonographic report with a person who is complaining, immediately the doctor will come to know that this is not normal, and then the therapy will be suggested by him. Okay? So they are aware what is good, what is not good. So उसमें reflection of sound wave भी काम करता है. जो reflected wave है, they are fed into computer process and image is generated. They have that technique. So to obtain the image using ultrasound wave, okay, X-ray rays are harmful for because pregnant. this is much more energy, it will cause cancer, too much of, इसलिए एक्सेस फटाफट नहीं निकाल. once in a month. एक बार एक्सरे निकाला तो गैप रखते हैं, बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम होता है, सेल्स को डैमेज करें. अल्ट्रासाउंड वेव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. And two, even ultrasound is not recommended to go through daily. It will damage. Even sunlight will eventually damage. If you stand in hot sun for couple of hours, क्या होगा? Exhaust हो जाएगी. किसी किसी को स्किन का कैंसर भी होता है. टैनिंग तो ठीक है, it is temporary.
in Australia and all, where the sunlight is very harsh. So people get a lot of skin cancer. Because sunlight has UV rays and all. तो ओजोन बहुत प्रोटेक्ट करता है, but still it is carrying electromagnetic. तो अल्ट्रासाउंड वेव हो गया क्या? ठीक है, so we'll continue this medical applications. ठीक है, 12:31 हो गए. तो मुझे सुन रहा था कि घड़ी देख रहा था. देखा टाइम तो देखा था. ठीक है. बनाना कब खराब कर रहे हैं नहीं बनाया खराब हो गया था सबको बना देना और उसके ऊपर ड्राइंग कर और स्टैटिस्टिक्स है
वो करना है। क्या बुलाया नहीं मुझे 27 सर एक मिनट लेट था हमारे से। एक मिनट और एक्स्ट्रा ठीक है। स्कूल कब से स्टार्ट होगा? इंटरव्यू कल क्या करोगे? मजे। अभी तो लग रहा है संडे होगी। हाँ अभी टेस्ट देना है। कौन सा था? मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ज्वाइन किया? नहीं अभी असाइनमेंट है ना, आर्ट्स की ऑप्शनल है। बाकी किधर गया? बाकी दिखाई नहीं दे रहा कोई। ये भी आई 1 महीने के बाद मेरे ख्याल से, है ना? चलिए डिमांड है। करने लगा इतने सारे क्लासेस मिस किए तुमने। वीडियो देख रही थी टोटल क्लास एंजॉय पैकेज। चलो ठीक है। But those will miss a lot of lectures. You may have to go for extra lectures now. नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा सिखा देगी। Either. नेक्स्ट नहीं, I will come. You like, I mean, ठीक है, I will go versus how many chapters are remaining? 2, 3 chapters are. क्या क्या बाकी है वहाँ? लास्ट के 3। नहीं, साउंड वेव तो चल ही रहा है ना? लास्ट के 3 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक्स। ठीक है, ज्यादा बाकी भी नहीं है। You can ask for me, like if most of the class is absent. वो रिवीजन से तो होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो एक बार में पढ़ा थोड़ी ना। खाली 2-3 बच्चे रेगुलर, इसमें से तू भी रेगुलर है, लेकिन लेटली यू हैव बीन मिसिंग। और एक जो हमेशा रेगुलर था वो भी आ ही नहीं रहा। क्या नाम है उसका? वो अभी बाहर जाना था, वो केरला ट्रिप जाना। इसलिए मतलब ट्रिप, स्कूल ट्रिप हाँ लंबा, बहुत लंबा है। हाँ ऐसे शिमला वगैरह भी जाती है तुम्हारी स्कूल ट्रिप? नहीं, एक दिल्ली के लिए निकला तो कैंसिल कर, मतलब दिल्ली के लिए गया, उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने बोला कि इतने बच्चे नहीं आते तो फिर नहीं कर, ट्रिप के लिए केरला गया, उसके बाद 2 दिन ये हमारे तुम्हारा स्टडी टूर होता है या हैप्पी टूर होता है? क्या होता है? एजुकेशनल ट्रिप। क्या एजुकेशन होता है? मिंगलिंग विद पीपल, सोशल एजुकेट, हाँ हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, history of ताजमहल old monuments. Why only Taj Mahal? They only take you to Taj Mahal. ताजमहल, जंतर मंतर, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। Sites of historical significance. Mostly archaeological. क्या होता है? Archaeological, yes, right. Archaeological Society of India. आपके Archaeological Society of India. Yes. Which keeps track of all the historical monuments. Okay, let's come back to medical applications. So, go back. What happened to Azim? छुट्टी चला गया वो। Azim? जब आजम? जब कहाँ चला गया भाई?
उसका कोई है नहीं कि छुट्टी करने का मन करेगा तो कर ले लेगा नहीं तो वो भी एकदम रेगुलर था, लेटली कुछ बट ठीक है, सो ट्राई टू अटेंड, बी रेगुलर, और नहीं हो तो फिर आई डू एक्स्ट्रा लेक्चर वेरेवर यू फील, बिकॉज अभी मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, सब जगह के सिलेबस खत्म होंगे ना, फिर आई विल, ठीक है। मेडिकल एप्लीकेशन में एक तो था सोनोग्राफ, तो ये लास्ट टॉपिक है ना हाँ ये लास्ट है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उसमें बड़े से न्यूमेरिकल हैं शायद, बिल्ड टू दैट। तो मेडिकल में सबसे पहला क्या था, एक तो सोनोग्राफी था। तो सोनोग्राफी क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, organs using the technique of तो टेक्निक लिखा है आपने टेक्निक है यार, वहां से रेन निकालना है ठीक है, टेक्निक ऑफ एको। एको जब बोला तो समझ जाओ, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, एक वर्ड में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है। कैसे करते हैं मैंने बताया, रिफ्लेक्टेड साउंड को प्रोसेस करो, इमेज करो, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें एक और चीज होती है, वेन दी इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे क्या इंटरनल ऑर्गन्स में होता है तुम्हारा लीवर, पैंक्रियास गॉल ब्लैडर, हाँ वही सब, सर फीटस यूटेरस, ठीक है, इंटेस्टाइन। तो ये सब बगैर काटे पीटे सब देखना है, व्हाइल इट इज स्टिल फंक्शनिंग, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है ना, वो भी रिमूव करते हैं, माइक्रो स्मॉल सर्जरी करके, लिपोसक्शन बोलते हैं उसे, दो तीन होल करते हैं। और लीवर में रहता है वो निकाल सकते लीवर का अनफॉर्चुनेटली क्या है, लीवर सेल्स खुद से डैमेज और खुद से रीजनरेट होते हैं, बट हमारी पूरी बॉडी में ये चलते रहता है, और ओल्ड सेल्स डाई, न्यू सेल्स फॉर्म, दिस प्रोसेस सफर्स डिस्टरबेंस, ओके। मतलब वो जो सेल डेथ एंड सेल ग्रोथ अगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो वही उसी को कैंसर हो, वही कैंसर हो, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रिमूविंग किडनी स्टोन्स, रिमूविंग किडनी स्टोन्स, ये भी यूज कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स कैसे निकलेगा, देखो स्टोन डिसीज तो पता है ना, तो क्या होता है कि थ्रू द पैसेज ऑफ यूरिन उधर स्टोन आके अटक गया, बेसिकली जो कैल्शियम होता है हमारे इसमें फ्लूइड में, वो क्रिस्टलाइज हो गया, वो स्टोन खुल गया, then it blocks the passage of urine, और यूरिन पास नहीं होता है, इकट्ठा हो रहा है बट वो निकल नहीं रहा, मतलब क्या करेंगे, हैं तो वो फ्लूइड है काफी भी कुछ जगह में नहीं लगा है नहीं नहीं, तो कैसा होता है ना, अब वो स्टोन, अभी तुम्हारी बिल्डिंग कैसे है, सीमेंट एंड कंक्रीट मिक्सचर है ना, उसको क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन बीच बीच में क्या हो गए, तो वो जो कुछ कुछ तो हार्ड हो गए, और बीच में कुछ कुछ वो ग्लू का काम करेगा, सडनली इट्स अ क्लोज पाइप, तो क्या करेगा उसको, फिर वो वही पोजीशन में रह गया तो हार्डन हो गया, तो कंप्लीटली हार्डन होने से पहले अल्ट्रासाउंड से हम क्या करेंगे, उसको वाइब्रेट करेंगे,
फुल्ली हार्ड नहीं हुआ, लेकिन हार्ड हो गया उसमें पैसेज ब्लॉक कर गई, जैसे अपना जो यूटेंसिल्स क्लीनिंग वाला जो ड्रेनेज पाइपलाइन, उसमें थोड़ी ना स्टोन भरा हो, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है कि नहीं ड्रेनेज, तो उसमें क्या डालते हैं, ड्रेनेक्स एक केमिकल डालते हैं, वो क्या करता है उसको डाइल्यूट करके क्लीन कर देता है उसको, वो कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टन कर देता है, उसके बाद वाटर डालेंगे प्रेशर से तो वो निकल जाता है, ठीक है। वही चीज जो अल्ट्रासाउंड से हम उसको एक्सपोज करेंगे, वो दैट विल vibrate, take it so much that it will become powdered, will get converted into small granules. Okay, and then with the passage of urine, it will be flushed out. And this is only possible to do till the hardness level is below certain degree. If it has become too hardened, then it has to be surgically removed. Okay, so to avoid surgery, तो operate करना पड़ेगा. To avoid surgery, this is tried once. If ultrasound is effective, then surgery will be avoided. ठीक है, तो कॉस्ट थोड़ा बच जाएगा और पेशेंट को भी वियर एंड टियर कम होगा. एक बार कट किया तो उसको एक महीना तो लगेगा हील होने के लिए, ठीक है, वो सब पंगा है. ये समझ में. थर्ड क्या होता है, बेबी का स्टेटस चेक कर सकते हैं, हमने वो बताया. और क्या है, when ultrasound waves are used exclusively for heart imaging to check the status of heart, so that is called echocardiography. That's called. जहां पे भी echo word आता है ना, मतलब क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड वेव यूज हो, ठीक है. So it is used in echocardiography. हार्ट रिलेटेड जो बनता है इमेजेस, वो हार्ट. इसमें भी अल्ट्रासाउंड वेव हार्ट पे डालेंगे, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो वेव आ रहा है उसको कंप्यूटर में फीड करेंगे, फिर उसको रीजनरेट करेंगे. क्या क्या अच्छा, तो ये हो गया एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है. तो इस तरह से हमने वो सब कंप्लीट कर दिया. तो इट हैज हाई डायरेक्टिविटी, मतलब एक ही डायरेक्शन में ज्यादा लंबा जा सकता है. व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल वेवलेंथ. वी डिस्कस दैट. Then we have difference between ultrasonic and supersonic. There is something called as supersonic. Sonic means it is related to sound wave. Or what is supersonic? देखो, सुपरसोनिक क्या होता है, छोटा पैकेट में बड़ा धमाका की बात कैसी है. लेट अस से the source of sound is also traveling. ठीक है. Can you give me an example of source of sound which is traveling? Aeroplane, helicopter, any machine. Fighter. Yes. So a car travels at a speed of what? What is the speed limit you see on the roads? 180. Normally 60. 180. Normally 160 or 80. Where 160 in India? Computer games से वो हाईवे से तुमने देखा होगा स्पीड लिमिट 60, 80. 60, 80, 120 मैक्स हमारे कंट्री में. कहीं पे भी 120 होता है ज्यादा से ज्यादा. एक्सप्रेस वेज इन आवर कंट्री, some places only 120. Beyond 120 I have not seen. People don't obey, that's a different thing. People go 160, 180 also. Powerful cars. They get a ticket. If they, so now the entire expressway, अभी तो क्या CCTV put up किया है. Now if it is monitored on a satellite, you'll get a ticket at your home. So don't be under any disguise कि अरे CCTV है नहीं तो कोई watch नहीं कर. The surveillance systems have become very strong now. और उसमें GPS है. अब आ जाएगा धीरे धीरे.
कई बार होता है और तुमको बताया नहीं जाता। गवर्नमेंट इज पुटिंग एवरीथिंग पॉसिबल टू मॉनिटर अस GPS एनीथिंग। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो भी डिवाइसेस बनता है ना, मैन्युफैक्चरर उसके अंदर आईपी टैगिंग करके बेचता है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, वैसे हर डिवाइस का क्या होता है, आईपी टैग। सो एनी डिवाइस टुडे कैन बी कनेक्टेड टू इंटरनेट इफ इट इज नेटवर्क। ब्लूटूथ होता है सब पे, आ गया ना नेटवर्क पे कि नहीं? हाँ। तो कोई फेसबुक पे है, अगर आप किडनैप हो गए तो कैसे GPS नहीं होगा? आपको अभी फिर समझ जाओगे कब हो रहे हो किडनैप, बता के रखो, मैं सेट करके रखूँ है तब सिस्टम से। Many things are not brought in public domain. ये तो thieves भी अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी के कुछ सीक्रेट्स रखता है मैन्युफैक्चरर, जो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास होता है। बहुत सारा चीज इनको पता नहीं होता है, पता है पढ़ते पढ़ते पता चलता है ना। अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा। By interacting with people who are into security या तो सिक्योरिटी रिलेटेड डोमेन में बहुत ज्यादा रिसर्च करता है तो मालूम पड़ेगा। See, like your father may not be doing games as good as you do. तो तुझे कैसे पता चला? पापा एज में बड़ा है, उनको नहीं पता है, तुझे पता है। Because you are focused, you are acquiring information in that direction. ऐसे ही होता है। सबके हॉबीज और इंटरेस्ट होते हैं, तो वो एरिया में वो क्या करता है, एफर्ट डालता है। वो चीज उसको दूसरों से ज्यादा मालूम होता है। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अल्ट्रासोनिक एंड सुपरसोनिक। तो सुपरसोनिक में क्या होता है कि when the sound producing object is traveling at a speed greater than the speed of sound itself, इसको सुपरसोनिक बोलते हैं। Are you with me? What is the speed of sound? 330 meters. 330 या 340, उसको बोलते हैं मैक 1। क्या बोलते हैं? मैक 1। That is any sound producing object. So this is speed of sound actually, which is 330 meter per second. ठीक है, ये मैक 1 स्पीड होगी। But if any sound producing object travels with speed greater than this, means it is producing sound and also traveling with almost the same speed or double the speed. तो मान लो वो 660 से जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या हो गया, मैक 2। तो अभी जैसे तेजस सुन रहा है ना, तेजस या मिसाइल, मैक 1 मैक 2, तो अगर वो मैक 2 से ज्यादा था उसका स्पीड क्या हो गया, सुपरसोनिक। क्या हो गया, सुपरसोनिक। मतलब if it is more than 340 350 वो क्या हो गया, सुपरसोनिक, because it is having speed more than speed of sound. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट travels with supersonic speed, it creates sonic boom, very loud thunder, shock waves are sent into atmosphere. Let's say a fighter jet plane is flying at, you know what is the typical speed of a fighter jet? Almost 1,000 kilometers per hour. पर नहीं और ज्यादा, not per hour. 1 meter per second. 1,000 किलोमीटर पर आवर का कितना हुआ ये, 330 मीटर पर सेकंड हो गया। 1000 kilometer per hour. 1000 into 5/18 कितना हुआ है, इसको 20 ले लेंगे। और ज्यादा होगा, 1000 से भी ज्यादा होगा। 1000 तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट लगता है, तो अपना ये है ना बोइंग जिसका तो पैसेंजर हो जाता है, उससे बहुत ज्यादा होगा। सर मेरे मामू घर पे वो खुद में रहते हैं, तो उनके बाजू में मतलब ये फाइटर जेट का पूरा हाँ तो वो साउंड वो सोनिक बूम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किया है। तो उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे माँ में चिपक जाते हैं, इतना अनबियरेबल साउंड होता है कि लगेगा कि प्राण ही निकल गया, हाँ। इतना तेज होता है। मैंने सुना है एक बार, बहुत
उसमें जो ग्लास बिल्डिंग ये विंडो के ग्लास लाइन है उसको शटर क्यों रहते हैं, ठीक है। वो जो नियर बाय सच प्लेसेस जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के पास में जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनका अलग से स्पेसिफिकेशन होता है। तो कंस्ट्रक्शन के डिजाइन करते टाइम पे वो पूरा स्पेसिफिकेशन फॉलो करना होता है, पूरी है। पूरा डिफरेंस ही है पूरा। हाँ पूरा डिफरेंस है मेरे मामा को लगता है। हाँ, तो बुर्ज में है ना बुर्ज ये वो। और सर वो ऑलरेडी उधर मतलब टेररिस्ट अटैक्स होते रहे। तो 5/18 होता है 0.27 और 0.28 ले लो, तो 0.28 into 1000 कितना हो गया? 0.8 2000 800 0.28 into 1000 280 0.2 280 तो 1000 नहीं, फाइटर प्लेन का और ज्यादा हो, फाइटर प्लेन का स्पीड 2000 के आसपास हो, अगर उसको 2000 करते हैं तो ये आता है 560 which is more than Mach 1, ये सुपरसोनिक स्पीड होगी। हो गया होगा 660 हो जाएगा सर, ये Mach 1 हुआ 330 मल्टीपल्स ऑफ 330, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो जेट प्लेन्स है या फाइटर प्लेन्स उनका स्पीड ऑलमोस्ट डबल हो गया। पैसेंजर तो आराम से क्रूज करते हुए, वो तो मैक पर नहीं है, लेकिन जब फाइटर जेट जाता है तो उसके सराउंडिंग में इट विल क्रिएट अ सोनिक बूम व्हिच इज लाइक वेरी अनबियरेबल साउंड। तो ये बता रहा है सिग्निफिकेंस साउंड सुपरसोनिक से हो क्या सकता है, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं। तो पहले हमारे पास कॉन्कॉर्ड जेट्स होते थे, जैसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो अभी बहुत टाइम लगता है। अगर सुपरसोनिक प्लेन्स हो गए, है ना, तो हम फटाक से पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में। हमारा जो ग्लोबल ट्रैवल है टाइम में ड्रास्टिकली कम। जैसे अभी यहाँ से यूएस जाना में कम से कम 18 घंटे का फ्लाइट है, मुंबई से तो न्यूयॉर्क जाओगे तो 18 घंटे तक हवा में जाना पड़ेगा। किसी किसी को ये दिमाग में प्ले होते रहता है यार हवा में, तो उसको सर रिस्क भी है ना अभी लास्ट हुआ क्यों, तो अर्थ पे नहीं है क्या, इधर अर्थ कोई आ गया सैनिटरी गड्ढा हो गया मन था अंदर घुस गया तो, और सीधे वोल्केनो में गिरे तो वो वॉल्केनो इधर है ही चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिले, मुंह खोले पेपर। अरे वॉल्केनो कहाँ से आते हैं अर्थ पे उसमें क्या है बेटा, सर नीचे वॉल्केनो वापस है मतलब है वोल्केनो है, ठीक है। प्रेशर कुकर समझता है हाँ क्या होता है प्रेशर कुकर, उसके अंदर स्टीम स्टीम बन रहा है, ठीक है। और जो बाहर का विसल है वो जब हैवी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो प्रेशर में इतना ताकत है कि उसको क्या करता है, विसल को ऊपर मूव करता है और स्टीम को बाहर निकालता है, बराबर। फिर से प्रेशर अंदर कम हो जाता है। अगर किसी तरह से वो स्टीम उसको विसल को नहीं हटा पाया तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो अगर मान ले ये नीचे अंदर वोल्केनो है और वो वाटर ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या बनेगा, अंदर स्टीम बनेगा। और वो स्टीम अभी अर्थ क्या है, अर्थ इज पोरस, धीरे धीरे निकल गया तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं पे रॉक्स है, रॉक्स उसका जो पैसेज है, पैसेज अगर है उसने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो स्टीम ट्रैप हो रही है, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्या होगा, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसको शिफ्ट करेगा। यहाँ पे ऐसे ब्लास्ट हुआ, ये तो यहाँ पे ये लेवल ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, इसमें कोई आ गया शक्तिमान बच जाएगा, नहीं आया तो नहीं। ओके, सो ये समझ आ गया, तो विल क्विकली run through what we have done in this chapter. You will tell me what we have done in this chapter.
कितने कितने फॉर्मूले देखे हमने इस चैप्टर में? 5 कौन से? पहला v is equal to x by d, फिर दूसरा v is equal to f लैम्बडा, फिर v f is equal to, सर एक और था ना, क्या? v is equal to root of density upon pressure, ई बोलते हो, फिर उल्टा बोलते हैं, प्रेशर वर्डिंग, वो गामा भी। हाँ फिर इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको कुछ नहीं आएगा, वो खाली स्पीड ऑफ साउंड का समझने के लिए। डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, डेंसिटी कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। और सर अभी हमने जो किया v is equal to 2d upon, तो अगर ये डी है तो इसको डी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हमारा नॉर्मल स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला है, और जब एको होता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज होकर ये हो जाएगा। ये हमारा वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। और वेवलेंथ क्या होता है ये सब हमने डिस्कस किया होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो सब हमने डिफाइन किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साउंड का चैप्टर। चलो अब हम रिव्यू क्वेश्चन करते हैं। और आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल कर लें, नहीं सर, क्या आज में नेक्स्ट क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी है ना इसके बाद एक ब्रेक के बाद। अच्छा ये सेकंड क्लास हाँ सर, रिव्यू क्वेश्चन में ये करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस धीरे धीरे करो। ये कर लिया? किधर किया? अच्छा तो तुम चुप रहना, मेरे को इनको टेस्ट करते हैं। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑलरेडी क्वालिटी, वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो साउंड का प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग। सो हाउ आर वी प्रोड्यूसिंग साउंड? तुम चुप रहना, हाउ आर वी प्रोड्यूसिंग साउंड? हाउ? Yes, our vocal cord vibrate करता है। How? When the air from the lungs come out, when it passes through the vocal cord, so vibrate करता है। Second question, चलो you take turns, both of you. If you want to answer, raise your hand. But don't speak. Okay. So second, who wants to answer? You follow. Which is option C. Okay, correct. Third option. Read your question. Lightning flash faces earlier than the sound of thunder they will see. This is because the speed of light is greater than the speed of sound. Yes, that's correct. Is this chapter taught in your school? You attended that? Okay, so no questions here, right? Okay. So what is the speed of light? Three into 10 raised to 8. And what is the speed of sound? Huh? 3? Nearly 300. So how many times the speed of light is more than speed of sound? 2 times, 3 times, 3 times. There's 1 million. Yes, 1 million times faster. That's why you see the lightning much before the thunder. Okay. Okay, so the thunderous roar is heard much after. So if it is 3 into 10 raised to 8, it is as good as 300 into 10 raised to 6 meter per second. And speed of sound is nearly 330 or 300 euro. So it is, when you divide, speed of light is 1 million times faster than speed of sound. Remember this comparison. So these questions are applications based. Okay, fourth. What is the answer of the fourth part? Loudness. Yes. Is loudness, right? What loudness depends on?
Amplitude. Yes. So which signifies energy. Okay. So intensity, right? Intensity depends on amplitude square. So are you familiar with intensity? So intensity also we discussed. So intensity basically loudness is a subjective thing, right? Like same sound may appear loud to you and it may appear feeble to same sound. So then how do we compare them? नहीं ये नहीं थी ना इसको मैं और उसने इंटेंसिटी स्कूल में भी नहीं पढ़ा तुमने पढ़ा स्कूल में नहीं तुमने नहीं पढ़ा स्कूल में याद नहीं आ रहा तो इंटेंसिटी क्या है ना देखो लाउडनेस इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी दिस इज सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी and intensity is objective property. So do you understand what is the difference between subjective and objective? Subjective cannot be measured exactly, like subjective questions and objective questions. If the question is objective, the correct answer is known, objectively known, that this is going to be the answer. And everybody had to write the same answer, is objective. So it can be distinctly and accurately measured, intensity. But loudness, which is based on experience, different people's sensitivity of ear is experience based. So there is one sound, you are saying it is very loud. He will say, no, sir, it's very people. He's enjoying that. Like rock music, right? Some people enjoy that, and some people will say it's noise. So that is experience or perception based. So when things like if it is subjective question, same question, if there are 10 students, all their answers, wordings will be different. They might be conveying the same meaning, but the sentences and words they have used may be very different. That is called subjective. Okay. So subjective is experience based. It will differ from listener to listener. Okay. But science does not work like that. If it is one sound, it should have one measurable characteristic. And the measurable characteristic of loudness of sound is intensity. And how do we define intensity? We define it in terms of energy. So intensity is defined as energy flowing per unit area or unit time. Energy, sound energy, and it is intensity is applicable for any energy. So it is the amount of energy, in this case sound energy, flowing per unit area per unit time. So area into power. yes, area into power नहीं. This is power, power upon area. Energy upon time is power. Power. E by A. So let's say when I'm speaking, so imagine this is same medium. Now imagine a wind tunnel is created. 3 wind tunnels are created. Okay. So tunnel, let's say this is the tunnel pipe. So this is the area. So energy flowing through this area, perpendicular area. Okay. So the intensity of the sound produced by me is, let's say this is unit area, 1 meter by 1 meter. That is the area. My sound is traveling in this direction. So it has to be perpendicular area. Okay. In each second. So A is equal to 1 unit, T is equal to 1 unit. Then whatever is the energy traveling, that is intensity. Okay. So when you fix area in time, 1 unit, then whatever is the energy traveling, that is intensity. And that is fixed, that's measurable. Okay. This is how intensity is measured. Or it is power flowing per unit area. So light also, it will be light intensity. If more light intensity is crossing the given unit area of cross section, then it will be more bright, more energetic. Okay, that's how it is.
What is fifth question? So what is the answer? Loudness. Okay. Fifth. Sir, 400. Frequency of source of sound is 200 hertz. How many times does it vibrate in 2 minutes? How many seconds are there in 2 minutes? Sir, minutes, 120 seconds. 120 seconds. In each second, it is vibrating how many times? 100 hertz. 200 times, right? 200 per second. In 1 second, it is vibrating 200 times. So in 120, it will be. 40. So 200 into 120. 1 second, this much. So this is 24. 1000. 100 or 1000? 1000. 1000. Do you have any answer like that? Yes, sir. What you said? 0. 2400 you said. ये देखो mistake हुआ इसलिए don't rely on mental calculation. ठीक है? So the answer is 24,000. C. In direct questions, you just go through the questions. Is there any question where you need me? No, Well, sir. Maybe. ठीक है? Then we go on revise to chalo, first one. There are only 5 minutes left. What? 25, No, 120 of plus. 35. 120 minutes. बहुत nuts. 120 plus 7 हो रहा है. हाँ, किसने बोला तुमको? मैंने देखा था आज. This is my hand. Taken the title. What is written in your table? 135, right? हाँ, क्या बात कर रहे हो? What date is today? 24, 13, 35. Done. Right, what time is? 35? Okay, we'll do numerical in the next class. Let's take application. 120. 35, 35. 11:30, no, 1 hour lecture है. So our break was from 30 to 35. So now it is 1:30. चलो, next question. Application टाइम करते हैं. numerical करेंगे next class. Read the question. Everybody now read. Now since you have already attended that institute, let's discuss the question. Done. Hold that on for you. Follow. Atmosphere. Hmm. There is no atmosphere on moon. Can you hear each other on the moon surface? No. Why? Then because moon does not contain any medium for light for sound to travel. It contains vacuum where sound cannot travel. Exactly. Sound is only possible when there exists a medium to carry the vibrations. And medium should also satisfy sound. Properties. Yes. Which are the And elasticity of the molecules elasticity of the medium, and then density of the medium, friction. density of the Molecules should not produce any friction. So expected. मतलब minimum friction is good. Okay. So friction and density are interrelated. Density is more, friction is more. Second question. Everybody take turn. He has already taken first question. Second question. Show on displacement time graph of a wave. So let me draw the displacement time graph. Let's say y-axis is displacement. And this is time. And the wave is like this. So what is the amplitude? just like No, let them try, na?
So what is the amplitude? बताओ. So this is amplitude, है ना? Maximum displacement from the main position. Here, we write it as plus A or minus AC. it is the maximum displacement from the main position on either side of the main position. Okay. So the molecule or the particle could oscillate like this, like in case of sound, and it is traveling in this direction. Or like in case of transverse wave, like free water waves, it can oscillate up and down. Two types of disturbance are possible. Parallel to the direction of motion of wave or perpendicular to the direction of motion. So when it is perpendicular, we call it transverse. When it is parallel, we call it longitude. There are two types of. Then time period is time taken for one wave to complete. Yes. So what is the time period? Starting from O, this is also time period. Meaning from here to here. From trough to trough. This is also one wave. From what? One crest. Do you get crest in sound wave? Do you get crest in longitudinal wave? No. Then what do we call here? Crest? Crest is called Survey. just trough. C6 should work. Yes, compression. Crest is yeah, it is compression. So the same graph is shown, right? So this is rarefaction. So when you represent the longitudinal wave, the y-axis does not represent displacement. What it represents? Pressure or density. Pressure or density is maximum. Okay. So what do you call crest? So crest means here the displacement is counted. And in this case, what is counted is pressure or density. Yes. When all of them are coming together, maximum pressure. So wave can be represented in the same form. Now can I do the third one? Third one. One second. Trough को क्या बोलते हैं? What is the counterpart of trough in longitude? में rarefaction. Rarefaction. So here pressure and density is moving. Yes, third one. Four. So I already marked. Only lambda is to be marked. You can tell. Just tell me. Sir, time period is only. Why? Good. Time period is time period, but this distance traveled in time t. Disturbance is traveling like this. So that is also One. okay, and it repeats after one lambda again. Wave will start. So where do you have lambda? Wherever you have written time, you can also write lambda. Okay. Fourth question. No. How does the speed of sound differ in different media? Depending on the What are properties the of the. different media? Depending on the properties. Solid, liquid, and gas. Depending on elasticity and density. Density. So solid, liquid, and gas का comparison कर दो. किसका ज्यादा है किसका कम? Solid is maximum. And gas is minimum. In between and liquid. Correct. And elastic. Next, Dash of lighting reaches earlier than sound of thunder. we already did. Speed of light is great 1 million times greater than speed of. Correct. Sixth, If you place your ear close to the iron grating, tap from very available to account for excess. Then because it is like it's echo which comes to your ear again because the sound is trapped only in a certain area. this second sound is not because of echo.
Sound is traveling through two medium, one through rail, वो पहले पहुंच गया, और एक air से आ रहा है. ये sound सुनाई दे रहा है? कहाँ से आ रहा है? Air. तो ऐसे करेंगे. करके देख कुछ तो तुझे ऐसा फील होगा लो साउंड आ. तो सॉलिड से फटाक से आ जा रहा है और एयर वाला थोड़ी देर बाद आ रहा है. तो रेल में थोड़ा अभी तो डिस्टेंस बहुत ही कम, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो क्लियरली दिखेगा आपको दो अलग अलग. यू गेट इट. सो रूरल एरियाज में if you can't see the train but is the train close by, people used to detect by placing the ear on the rail. So if the rail is coming, if it is close by, you can also hear the sound, but if it is not close by, you can't hear the sound when you place the ear or sound आया. सर हमारा जो ज्योग्राफी का क्लास था और क्लासेस था अर्थक्वेक चैप्टर, तो मैंने पूछा कि रशियंस कैसे प्रेडिक्ट करते हैं अर्थक्वेक, तो मैम ने जब करेक्ट कर लिया और क्लासेस, तो मैम ने बोला कि आंसर ऐसे आए थे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स वी कैन से दैट इफ वी प्लेस एन ईयर ऑन द ग्राउंड वी कैन डिटेक्ट. नहीं कर सकते. Seismic wave are in the infrasonic region. ठीक है. Seismic waves are infrasound waves. तो हम रख भी दे तो भी हमको सुनाई नहीं देगा. Below 20 years. हाँ. Below 20 years. नहीं, certain animals they become unstable. So from the behavior, their behavior. Dogs. Dogs. So from their behavior, they will suddenly go very abnormal. So they look puzzled and run out of their shelters. Then people used to, or birds will begin to make noise of a certain kind. But they are sensitive. तो फिर वो लोग समझ नहीं ऐसे. Okay, next. So seventh question is interesting. The diver. I actually illustrate that becomes easy to understand. So what is that diver? So, हाँ. Diver. तो एक तो हो गया लैंड. लैंड में साउंड इज प्रोड्यूस ऑन द लैंड. ओके, एक्सप्लोजन. यहाँ पे ब्लास्ट हो गया थोड़ा सा. सो देयर इज अ बोट मैन, वो यहाँ बैठा हुआ. ठीक है. और एक ड्राइवर है, वो यहाँ बैठा है. ये ड्राइवर है यहाँ. तो साउंड इसके पास भी जाना है, दोनों का सेम डिस्टेंस है. क्या बोटमैन का जो साउंड है वो कहाँ से सुनाई दे रहा है? तो मुझे लग रहा है बोटमैन को सुनाई दे. एयर. इसका साउंड कहाँ से ट्रेवल हो रहा है? एयर में. इसका साउंड कहाँ से ट्रेवल हो रहा है? वाटर. स्पीड ऑफ साउंड इज कहाँ पे ज्यादा होता है, एयर में या वाटर में? ग्रेटर इन वाटर. इसको पहले सुनाई दे. और तो मुझे डाइवर. तो मैंने डाइवर ही बोला था स्टार्टिंग में. मैंने सुना नहीं, मैंने किधर हो, मैंने राइट रॉन्ग कुछ बोला ही नहीं. मैंने बोला लेट्स सी रेस्पेक्ट. तो ये तूने मुझे बोलने ही नहीं किया प्रॉपर्टीज ऑफ द फिगर. मैंने बताया स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स मैक्सिमम इन सॉलिड, देन इन लिक्विड, देन इन गैसेस. तो अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है. यस. 100 मीटर. 100 मीटर अवे और 100 मीटर बिलो, मान ले ऐसे सीधा हो, सीधा. ठीक है. ड्राइवर वुड हियर. Give a reason for your answer. रीजन वही. If sound takes time to reach the boatman, how much time approximately does it take to reach the diver? क्या करोगे? Sir, V is equal to E into. वाटर में जो स्पीड होता है ना, roughly 1500 होता है.
एयर में स्पीड होता है 340, ठीक है, तो ये यूज करके निकालो, ठीक है, फाइंड द रेशियो, ठीक है, फाइंड द रेशियो, तो टी है ना, almost 1:2, 1:2 ratio. तो इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, वी एयर इक्वल टू डी बाई टी एयर, ठीक है, वी वाटर इक्वल टू डी बाई टी वाटर, ठीक है, तो रेशियो देखो ये क्या हो गया, वी एयर इंटू टी एयर इज इक्वल टू वी वाटर इंटू टी वाटर, टी डी है इक्वल, ये तो कैंसिल हो जाएगा, वी वाटर कितना है, क्या निकालना है अपने को, टाइम पीरियड टी को टाइम को उन्होंने टी बोला है, किसका टाइम टी बोला, डाइवर डाइवर को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। चल वो तो हम ऐसे निकालेंगे ना, वी टू टी और टू वोट में किधर है, वाटर में, तो उसका वाटर का हमको टाइम पता है, टाइम इन एयर निकालना है ना, ओ सर टाइम इन वाटर डाइवर को नाम बोल रहे हैं, डाइवर because sound takes time till to reach the boatman, and how much time it takes to reach the diver, अच्छा, टी तो मतलब एयर दिया होगा, हाँ हमको ये निकालना है, सर देखो टी वाटर कितना होगा, वी एयर डिवाइडेड बाय वी वाटर इनटू दिस इनटू टी, ठीक है, टी एयर टी, ठीक है, बस इसका रेशियो निकालो, ये कितना हो गया 340, कितना लगेगा, यार अगर 30 होगा तो 2:1 होगा, हाँ ठीक है, मतलब वही होगा टू को थोड़ा ठीक है, तो टाइम वाटर में लेस देन 1 आ जाएगा ना रेशियो, वाटर में टाइम कम लगेगा, ठीक है, वाटर में टाइम क्या लगेगा, स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ टी, लेस देन 1 टी है, ओके, It's from first, no, second yes, third yes, इसका किसका एट का, fourth, no, हाँ, सेकंड थर्ड नो, फोर्थ नो, fourth no question है, वॉइस से डेंसिटी इफेक्ट नहीं होता है, क्या बात कर रहा है, स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स मोर इन वॉइस, डेंसिटी कम हो जाता है, experience है, फ्रेंड कह रहा हूँ लेक्चर, मॉइस्चर में हमें ज्यादा होता है स्पीड, वॉइस एयर में, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट, नाइन अलग सबसे है, फोर्थ वाला एम्पलीट्यूड, हाँ, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों उस पे नहीं आता है, अनएफेक्टेड है, एम्पलीट्यूड है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं, नहीं, वेवलेंथ है, नहीं, इस फॉर्मूले में नहीं है, which medium the speed of sound is never units, more, limited or given even to it happens. तो impedance मीडियर में स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, ड्रायर में स्पीड क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ड्रायर की डेंसिटी डेंसिटी कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है तब तो ह्यूमिड एयर में ज्यादा स्पीड रहेगा,
ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है, डी का नीचे है ना, डी नीचे होगी तभी तो बी ज्यादा होगा। क्या कंफ्यूज हो रहा है? ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए बी कम होगा। हाँ वो इन्वर्स बस उल्टा उल्टा सोचना, ठीक है। ठीक है अभी इंफ्रासोनिक बी सोनिक सी सोनिक डी अल्ट्रासोनिक ठीक है, that was easy. Last question. Let the girls answer. What is second pendulum? The pendulum which means Are you the girl? vibration with the Are you girls? Second pendulum कौन से चैप्टर में पढ़ा? अरे रुक ना यार, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? measurements and experimentation. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना? पेंडुलम का हमने पढ़ा था कि नहीं वहाँ पे? Yes sir. वहाँ पे था वो। Sir last page का last पेंडुलम paragraph. में टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1/2 0.5. 0.5। तो क्या ऑडिबल है क्या? लेस देन 20 होगी? Correct. कैन यू हियर? No. नो, इट इज इंट्रोस्पेक्टिव। ऐसा है एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन में तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स तो बहुत सिंपल होते हैं और उसमें कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो वैसे ही वेल बजने तक हम वर्कशीट के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो डायग्राम वाले बच्चे इसमें मुझे थोड़ा पेपर से डाउट है उसका. आप बता ना आ रहे हैं। कौन सा सर ये क्वेश्चन 3 का क्लियर है. उसको ना हाँ. तो ऑपरस का क्या फॉर्मूला होता है? Zero जी. तो ऑपरस इज बी रो जी। बी किसका? Volume of water. लिक्विड मतलब डेंसिटी, लिक्विड. ठीक है। ये होता है ना ऑपरस, ठीक है ना। अभी कितना आएगा? सर उन्होंने मास बोला है और वॉल्यूम दिया है. हाँ तो डेंसिटी आप निकालेंगे उससे हाँ निकल जाएगा। और फिर वॉल्यूम और डेंसिटी का फिर जी जी का वैल्यू लेना ही नहीं लेना. तो इसमें केजी दिया है, ये सेंटीमीटर क्यूब दिया है, बराबर। हाँ. अभी क्या करोगे? सेंटीमीटर क्यूब में तुम मीटर. मीटर क्यूब में ले लो। वॉल्यूम दिया तुमको मीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 2। ये है, ये आ गया तुम्हारा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? वाटर, वाटर का कितना होता है डेंसिटी? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा ना. हाँ ठीक है। तो जीरो हो जाएगा. और ग्रेविटी को तुम 10 ले लो, क्या कैंसिल हो जाएगा? चलिए पूरा कैंसिल हो. कैसे? 10⁻³ और 10⁻³ 10⁻6 हाँ प्लस 6 और -6 और कैंसिल हो जाएगा. जी ये जीरो हो जाएगा. फिर जी हमें लेने के लिए जीरो कैसे होगा? 10⁻0 1 होता है। 10⁻0 होगा ना, ये 1 हो गया। और जी जी कितना हुआ? 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड. न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 9.8 न्यूटन। तो डब्ल्यू अपरेंट वेट कितना होगा? वेट इन एयर माइनस 9.8 न्यूटन। वेट इन एयर कितना होगा? mg। मास कितना किया? 3.5। जी कितना है? तो 10 लेंगे, चलो इसको, अगर 10 होता तो 10 ले लेते इसको, ठीक है।
सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन एन होगा एन होगा तो ये 35 इंटू 10 माइनस 10 कितना न्यूटन हुआ कि नहीं 20 हाँ 35 न्यूटन आ गया। ये हो गया तेरा एपरेंट वेट और थ्रस्ट कितना निकला 10 न्यूटन भाई ऐसे मत करो ये 1 होता है 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 राउंड नहीं और ये होगा तो ऐसे करो यार उधर राउंड क्यों आ मेरा वाटर की डेंसिटी नहीं दी है वो तुम्हें याद रखनी है मैंने बताया फिर apparent weight मेरा राउंड है हाँ apparent weight ये तो फॉर्मूला है ना मैंने लिख दिया apparent weight is any अब थ्रस्ट ये zero हाँ अब थ्रस्ट का कितना फॉर्मूला होगा जितना वेट रिड्यूस होगा उतना ही तो ये W2 क्या है एवरेज वेट वही तो थ्रस्ट apparent weight is any fluid is zero एवरेज वेट इन any fluid is zero क्या सब है इसे लिख दिया it will depend on the thrust नहीं देखो तुम रट नहीं सकते फिजिक्स को you have to understand the concept ठीक है so I think we have to meet us tomorrow day after tomorrow also right है ना it's the same schedule 2 hours each day Sunday also we have to meet संडे भी है सर हाँ है चेक कर लेना टाइम टेबल इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ तो बच्चों को कल भी सेम टाइम है और परसों भी अभी तुम्हारा जॉली मैडम का लेक्चर है ना ये हो गया नहीं हो गया जो के पहले था नहीं हम अरे ये किसी का अगर ये नहीं है अच्छा नहीं इसको दूसरा ना ओके आई सी यू टुमारो